अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन द्वारा 8 जनवरी 1918 को घोषित 14 सूत्र 14 पॉइंट्स प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप और दुनिया में स्थायी शांति स्थापित करने की एक आदर्शवादी और महत्वाकांक्षी योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में ऐसे विनाशकारी युद्धों को रोकना और लोकतंत्र की रक्षा करना था। इन 14 सूत्रीय सिद्धांतों के प्रमुख विवरण निम्नलिखित हैं। 1. कूटनीति, डिप्लोमेसी, खुले तौर पर शांति समझौते होने चाहिए। भविष्य में कोई भी गुप्त संधियां या समझौते नहीं होंगे। 2. समुद्र की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द सीज, युद्ध और शांति दोनों समयों में समुद्र में जहाजों को पूरी आजादी होगी, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में। 3. आर्थिक बाधाएं समाप्त करना, फ्री ट्रेड, सभी राष्ट्रों के बीच समान व्यापारिक शर्तें होंगी और देशों के बीच मौजूद आर्थिक बाधाओं को खत्म किया जाएगा। 4. निरस्त्रीकरण, डिसआर्ममेंट, राष्ट्रों के आंतरिक सुरक्षा स्तर को बनाए रखने के अलावा सभी देशों के हथियारों और सैन्य बलों में भारी कटौती की जाएगी। 5. उपनिवेशों के मामले, कॉलोनियल क्लेम्स, औपनिवेशिक दावों का निष्पक्ष और तटस्थ समाधान किया जाएगा, जहां संबंधित आबादी के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 6. रूस की स्वतंत्रता, रूस के सभी क्षेत्रों को खाली किया जाएगा और उसे अपनी राजनीतिक नीतियों और राष्ट्रीय विकास को तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। 7. बेल्जियम की बहाली, बेल्जियम को खाली कर उसकी संप्रभुता को बहाल किया जाएगा। फ्रांस की वापसी, जर्मनी द्वारा फ्रांस पर कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों, विशेषकर अल्सास लोरेन, को वापस किया जाएगा। इटली की सीमाएं, इटली की सीमाओं का पुनर्गठन स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य राष्ट्रीयताओं के आधार पर किया जाएगा। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के विभिन्न जातीय समूहों को स्वशासन का अवसर और पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। बाल्कन राज्य, रोमानिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो को खाली कर दिया जाएगा। सर्बिया को समुद्र तक सुरक्षित पहुंच प्रदान की जाएगी। तुर्क साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर, तुर्क साम्राज्य के भीतर के तुर्क क्षेत्रों को सुरक्षित संप्रभुता दी जाएगी, लेकिन अन्य जातियों को स्वतंत्र विकास का पूरा मौका मिलेगा। डार्डानल्स जलडमरू मध्य सभी देशों के जहाजों के लिए स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्र पोलैंड, एक स्वतंत्र पोलिश राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा, जिसकी समुद्र तक स्वतंत्र और सुरक्षित पहुंच हो। और राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके तहत बड़े और छोटे सभी राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्र संघ, का गठन किया जाएगा। ये घोषणा युद्धरत देशों के बीच शांति स्थापित करने का एक आधार बनी, हालांकि इनमें से कई आदर्शवादी बिंदु बाद की पेरिस शांति वार्ता में पूरी तरह लागू नहीं हो सके। President Woodrow Wilson outlined his 14 points on January 8, 1918. They were a bold set of diplomatic principles designed to end World War I and establish a fair, lasting global peace. The plan championed open diplomacy, free trade, national self-determination, and the creation of the League of Nations. The 14 points can be broken down into three main categories: guiding principles, points 1 to 5, territorial readjustments, points 6 to 13, and global security, point 14. 1. General principles for peace, points 1 to 5. These points sought to address the root causes of the war, including secret alliances, imperialism, and protectionism. 1. Open diplomacy, abolish secret treaties, all covenants of peace must be public. 2. Freedom of the seas, guarantee freedom of navigation on the seas in both peace and war. 3. Free trade, remove economic barriers and establish equal trade conditions among nations. 4. Disarmament, reduce national armaments to the lowest point consistent with domestic safety. And 5. Colonial adjustment, settle colonial claims impartially, prioritizing the interests of the native populations equally with the claims of the governing powers. 2. Territorial readjustments, points 6 to 13. These points call for redrawing the political map of Europe based on national sovereignty and the right of populations to choose their own governments, self-determination. 1. Russia, evacuation of all Russian territory and the guarantee that Russia can determine its own political development. 2. Belgium, evacuation and full restoration of Belgian sovereignty. 3. France,
liberation of occupied French territory and the return of the Alsace-Lorraine region. 4. Italy, adjustment of Italian frontiers along clearly recognizable lines of nationality. 5. Austria-Hungary, autonomous development for the various peoples living within the empire. 6. The Balkans, evacuation of Romania, Serbia, and Montenegro, secure sea access for Serbia, and borders drawn along historically established lines of allegiance and nationality. 7. The Ottoman Empire, autonomous development for non-Turkish groups in the empire and free passage through the Dardanelles for all ships. And 8. Poland, creation of an independent Polish state with free and secure access to the sea. 3. Collective security, point 14. The League of Nations, the final and most important point, called for the formation of a General Association of Nations, to provide mutual guarantees of political independence and territorial integrity for both large and small states. Significance and impact. While the 14 points successfully boosted Allied morale and undermined the Central Powers toward the end of the war, the resulting Treaty of Versailles was far more punitive toward Germany than Wilson intended. However, the concept of a peace without victory and the establishment of the League of Nations permanently reshaped international relations.